कौन सा क्वेश्चन? Next, Arush will take square root of complex number. हम्म Sure. Square root of complex number. We have to find the square root of minus 15 minus 8i. See, the thing is, square root of a complex number is also a complex number. So it's या like a plus ib. And what is the definition? Isme a and b are real numbers. Now you have हम्म to perform some mathematical calculations, form some equations, and find a and b both. So first of all, we'll have to remove the square root. Arush, how will we remove the square root? we'll square both the sides. So when we square both the sides, we will get minus 15 minus 8i, and this is a plus ib the whole square. अब a plus ib the whole square को expand करो a plus b the whole square से. A square What? plus B square I square plus So 2AI minus 15 AB. minus 8i will be a square plus I square b square plus 2abi बराबर. हाँ, So minus 15 minus 8i will be a square. Now I square Arush will be minus 1. -1. So A square minus B square plus And 2AB. now you have to compare the real part with real part, imaginary with imaginary. हाँ, तो ये imaginary part 2ab और यहाँ पे लेफ्ट में क्या है? 8 Minus 8 with the sign. minus 8. Yes. From here we can say that b is minus 4 by a. Yeah. Okay. Now the real part with real part, which is a square minus b square equal to minus 15. Now Arush, in this, can we substitute the value of b as minus Hmm. 4 by a? And can you now solve this by taking LCM by forming a quadratic equation? Can you solve this to find the values of a? Yes. Do this. Yeah. कुछ नहीं See, you यहाँ पे. must be getting a square minus 16 upon a square equal to minus 15. Take LCM, a raised to 4 minus 16 is minus 15 a square. So a raised to 4 plus 15 a square minus 16 is equal to 0. तो अब इसको हाँ. quadratic splitting the middle term से करना है solve. Yes. Yes. So are you getting a square is either minus 16 or a square is 1? Yes. What do you think, will both be correct or is any one correct? So A square is equal to 1 will be correct. Minus 16 क्यों नहीं हो Minus सकता a square? 16 -16 भी हो सकता है. A is equal to 4I होगा. नहीं हो सकता because a and b are बट real नहीं हो numbers. सकता क्योंकि रियल नंबर. तो Yes. ये गलत है. This has to be correct. So there are two हाँ. answers. A is plus minus 1. देख अब a अगर plus 1 है तो b होगा minus 4, which means the number is Hmm. 1 minus 4i. If a is minus 1 then b is 4, which means the number is minus 1 plus 4i. देखिए समझा. हाँ सर. अब इसमें से अगर minus 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 minus 4i. तो फाइनल आंसर आरुष is going to be plus minus 1 minus 4i. That is the final answer. This is the square root of the given complex number. Yeah. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ. चलो. Now modulus and argument of complex numbers. तो सीधा है ना, हम लोग लेते हैं d and e जिसमें प्रॉपर्टी यूज करना है, बाकी बेसिक सम्स तो हो ही जाएगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो चेक द d1. We have to find the modulus of 1 plus 2i upon 1 minus 3i. We have to use the property of modulus, Arush. What is the property of modulus? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट. अच्छा, मॉड्यूलस का बोल रहे हो? तो ये होगा mod या of 1 तो 1 plus प्लस 2i upon 1 mod प्लस of 1 1 स्क्वायर minus प्लस 2 3i. स्क्वायर. Correct. या So this will be root of 1 square plus स्क्वायर 2 प्लस square 2 and स्क्वायर root of 1 square plus 3 3 square. स्क्वायर प्लस So the 3 answer is स्क्वायर root of 5 by 10. 1 5 by बाय root 2 is 10 the answer. 1 बाय 2. यस सर. अब आर्ग्यूमेंट. तो
So argument of z in this case. Achha, by the way, I hope you know argument is amplitude. I forgot to tell you. Argument and amplitude are one and the same. Okay, sir. Yeah, it's one and the same. So 1 plus 2i upon 1 minus 3i का argument find करना है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगा? जब डिवीजन होता है तो हम क्या करते हैं? तो ऊपर का आर्ग्यूमेंट ऊपर वाले टर्म का एंड आर्ग्यूमेंट नीचे वाले टर्म का और क्या करते हैं उसको? ऐड या सबट्रैक्ट? ऐड करते हैं. सबट्रैक्ट नहीं सॉरी, सबट्रैक्ट कर. सबट्रैक्ट. प्लस 2k पाई. सर वो 2k पाई भी तो आएगा आएगा, वो भी आएगा, उसका टेंशन मतलब. सो दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 2/1, so 2 2 minus tan inverse of -3. -3 बराबर है. करेक्ट. हाउ विल यू सॉल्व दिस नाउ? tan x minus tan y formula. चलेगा. यूज दैट एंड टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग. Yes. So check this, Arush. You should get tan inverse minus 1. हाँ. And now over here it's going to be, see, tan is negative in the second quadrant, Arush. तो second quadrant में हम angle को लिखते हैं pi minus theta. Theta. Yes. ये होगा pi minus pi by 4. So that's the answer. 3 pi by 4. 3 pi by 4. Yes. So. वो 2k pi का सीन क्या है? We have to use that to get it in the range. And we got it in the range. Range में होना चाहिए वो. तो ये 3 pi by 4 है. Tan inverse के रेंज में होना चाहिए. That is the whole idea of that 2k pi. तो वो हम लास्ट में चेक करेंगे. उसका इतना टेंशन नहीं लेना है. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है. Yeah, right. Chalo, so now we are taking questions which are based on locus, that is application of complex numbers in geometry. Take question 2 there. Yes. In every sum of finding locus, we will start with an assumption, let z is equal to x plus iy. So in second one, we have mod of x plus iy minus 2 minus 3i equal to 1. So we have x minus 2 Arush as the real part and I common लेके y minus 3 आएगा यहाँ पे. तो ये होगा x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square equal to 1, because squaring both sides कर दिया मैंने. 1 square is 1. Can you recognize what is this? Is it circle, parabola, ellipse, hyperbola? Do you know what is this? Yes sir, मैंने ज्योमेट्री कर. क्या मैंने ज्योमेट्री किया ही नहीं है. So you have no idea about this? No. तो देख, एक मैं तुझे थोड़ा ब्रीफ शॉर्ट में एकदम बता देता हूँ. So if x and y both are squares, yes, then it is circle. Okay. If x and y both are squares but the coefficients are different, then it is ellipse. If it is only x square or y square, सिर्फ एक ही वेरिएबल का अगर स्क्वायर है तो पैराबोला. Okay. And if it is, हेल्प कैसे करेगा ये? इधर करेगा. नहीं बताऊंगा. If it is x square y square both coefficients are different and signs are opposite, then it is hyperbola. Okay. तो हेल्प ऐसे करेगा. If you expand this, what will you get? Will you get 2 variable square or 1 variable square? 2 variable squares. 2 variable square. 2 variable square मतलब x square y square दोनों का, and will the coefficients be same or different? Same coefficients. So what should it be? It should be ellipse.
अरे कैसे सेम अरे कोएफिशिएंट सॉरी सर्कल सर्कल ना. सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी सर्कल सर्कल। this is how we can identify. हम्म So this is a circle. And there are more details actually, like from here we can actually say the center of the circle also. Center of the circle is 2 and 3. You basically have to equate both these brackets with 0. जो x और y का वैल्यू मिलेगा दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. और ये है ना, ये हम्म रेडियस का स्क्वायर होता है. तो रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 व्हिच इज 1. बट ये फिलहाल यहाँ पे ओके पूछा नहीं है तो हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. व्हेन वी टेक कोनिक्स वी विल डिस्कस दैट. ओके सर। डन. शैल वी प्रोसीड. ये भी लिख के रख साइड में इफ यू वांट. एंड इफ इट हाँ इज सर। नाइदर स्क्वायर x एंड y दोनों का भी स्क्वायर नहीं है देन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. इफ इट इज ओनली x एंड y दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. हम्म जस्ट सेंसर। श्योर. चलो नेक्स्ट वन. z is x plus iy. They have written z square plus z bar का square. See, z square will be x plus iy the whole square and z bar मतलब x minus iy the whole square. This is 2. कर दे पूरा expand and tell me what are you getting. या जस्ट सर, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई। So are you getting x square plus 2xyi plus I square y square plus या x square minus 2xyi plus I square y square equal to 2. हाँ तो ये तो कट हो रहा है. This is minus 1 minus 1. So now this is 2x square minus 2y square equal to 2. So we basically have हाँ x square minus y square is equal to 1. या ठीक है. एंड x square minus y square equal to 1 मतलब मैंने तुझे बोला ना, if the coefficients are different, here the coefficients are different, right? And minus f, like they are negative. हम्म अच्छा ये तो एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा. एक मिनट, ऑप्शंस में ये लोग ने गड़बड़ किया है यहाँ पे. वन मिनट, लेट मी जस्ट चेक माय कैलकुलेशन. अपना कैलकुलेशन तो करेक्ट है ना. x plus i by the whole square कैलकुलेशन x सोर्स minus i सही है, by the whole square the 2x square minus मेरा 2. भी यही आ रहा See, we are basically getting x square minus y square is 1. ये hyperbola होगा because coefficients are different. है। हम्म ठीक है, coefficients are different and दोनों squares है तो ये hyperbola होगा. And negative है ना, because it is negative this is hyperbola. If this was positive then it was a circle. हाँ ठीक है done? हाँ ठीक है. पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी हैव नॉट येट डिस्कस दैट. दैट्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. तो वो हम फिलहाल होल्ड पे रखते हैं. ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले. लेट अस कंप्लीट फिफ्थ वन. चलो यू ट्राई द फिफ्थ वन ऑन योर ओन. या So see, mod of z minus I is equal to mod of z plus 1 is equal to 1 बोला है. तो mod of x plus I into y minus 1 will be equal to mod of x plus 1 plus iy is equal to 1. तो मॉड्यूलस मतलब रूट ऑफ दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन द होल स्क्वायर. दिस विल बी रूट ऑफ एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी वन. So we will basically get x square plus y minus 1 the whole square equal to 1 as one equation and x plus 1 the whole square plus y square as second equation. हाँ अब यहाँ से हमें आरुष they have asked us to find the complex number. We have to basically find the values of x and y. ओके ठीक है. तो इसको अगर हाँ हम एक्सपांड कर देंगे, देख फर्स्ट इक्वेशन को एक्सपांड कर देते हैं. वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 2y इक्वल टू 0. सेकेंड में वाई हमें स्क्वायर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0. So when we add these equations, Arush, sorry, subtract. When we subtract these सब्ट्रैक्ट। equations, we will get 2x plus 2y is equal to 0. तो यहाँ से हमें मिलेगा x is equal to minus 12. यस उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं
or like directly let's substitute in this x is equal to minus y, so this will now be y square plus y square minus 2y equal to 0. Hmm. So 2y square minus 2y equal to 0. 2y common, this will be y minus 1. We'll get two answers, y is either 0 or y is 1. 1 So here x is 0, here x is minus 1. So the points are minus 0, 1. 0 or minus 1 common. These are the two answers. अच्छा, they have asked us We have to complex numbers. तो एक pick complex up. number होगा 0 plus 0i, which is actually a real number, and second होगा minus 1 plus I. Hmm. Done? एक साइड. Yeah, done. Sir. चलो सिक्स्थ वाला ले लेते हैं. State the locus of complex number z satisfying log mod So z of sketch the cos locus. of 1 greater than equal to log mod of z minus 1 and cos of 1. Ah, So sketch the locus. sketch the locus. Yeah, yeah. So we need to first find the equation and then we can sketch it. So first of all, Arush, do you know that cos 1 is less than 1? हाँ ठीक है. हाँ. अब log का एक रूल होता है कि if it is less than 1, तो log of that number is going to be a negative answer. Hmm. तो अब है ना, मैं दोनों साइड से log हटा दूंगा. I'll write mod z, I'll write mod z minus 1 over here. But because they are negative numbers, inequality में एक रूल था, when negative number is multiplied on both sides, the sign reverses. Yeah. So because on left and right both are negative numbers, to remove that negative sign, I'll have to multiply divide with minus 1. तो वो flip हो जाएगा. Greater than will become less than. Hmm. And now you solve this normally. If we take z as x plus iy, this will be root of x square plus y square. And this will be root of x minus 1 the whole square plus y square. Check this. Are you following this? Yes. अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके नॉर्मली सॉल्व करना है. तो करके मुझे पता क्या आ रहा है इसका आंसर. So you will get x is less than equal to half, because x square y square is getting cut, so 2x is less than equal to 1, x is less than equal to half. तो इसको अगर sketch करना है तो कैसे करेंगे? ग्राफ में see x equal to half will be this line where this is half Yeah. on the x axis. Less than equal to Hmm. मतलब ऐसा left की तरफ. This is the region x less than equal to half. तो बस यही sketch है. Yeah. ठीक है, आज इतना ही करते हैं. We'll take polar form and exponential form tomorrow. Okay, sir. चलो, bye bye. But sir.